Hello and welcome to Deep Point. And yeah, time to go live again and time to talk about India in the Asia Cup and this huge win against Pakistan. Obviously, it was played over 2 days, which is in itself quite rare. अगर आप सोचेंगे रिजर्व डे पहले भी हुआ है लेकिन yeah, um, it was quite weird because of obviously back to back 2 days barish ke chalte, but what a win. It was an absolute um, mauling of Pakistan. It on and most importantly, मुझे नहीं लगता कि of late Indian team has had a perfect game like this. Uh, Batting कह लीजिए top four, 200s, two half centuries. Then obviously bowling, Kuldeep picking up five, Bumrah bowling well, Hardik bowling well, Siraj bowling well, Jadeja. I mean, just name it. I can't think of anything जो कि थोड़ी सी भी चूक हुई हो इंडिया से. So it was an absolute perfect game. And सिवाय टॉस के अगर टॉस जीत भी जाते तो भी आई थिंक दैट्स व्हाट रोहित मेंशन्ड wanted to bat first. And I was a little surprised. सबसे पहले टॉस से बात करते हैं with Pakistan. I think that was one of the major mistakes, or I wouldn't say mistake, but yeah, I was surprised कि टॉस जीत के पाकिस्तान पहले bowling क्यों? Because obviously जो मैंने पहले भी कहा था वो pitch looked much better. मैं तो 280 कह रहा था, बट या जब मैं ग्राउंड पे गया पिच को देखा इट लुक बेटर देन दैट. 310 लग रहा था. उसके बाद तो खैर वाज एन एब्सोल्यूट मास्टर क्लास. लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि पाकिस्तान क्योंकि अंडर लाइट्स तेज गेंदबाज जो हैं उनको ज़्यादा मदद है, स्विंग ज़्यादा होता है, स्किड करके आता है, इट्स क्विकर. एंड स्पेशली विद द स्ट्रेंथ दैट पाकिस्तान हैव इन द bowling attack, I was surprised to see you know Pakistan bowling first in the afternoon. Uh, और ऊपर से आई मीन आई थिंक द ओनली थिंग जो उनके दिमाग में रहा होगा वाज कि बारिश आती है तो डीएलएस मेथड. लेकिन रिजर्व डे है और वो डीएलएस मेथड आई कैन अंडरस्टैंड टू अ ग्रेट एक्सटेंड कि आप जब T20 खेलते हैं 50 ओवर्स में देयर इज एनफ टाइम टू एडजस्ट. So yeah, that toss wala was a little surprised. I would have understood India wanting to chase because that's India's strength. But anyways, let's talk about the masterclass, Virat or KL Rahul. It is unbelievable. देखिए विराट का तो ऐसा है कि इस 47th ODI 177th इंटरनेशनल, इट वाज एन एब्सोल्यूट मास्टरक्लास. किस तरीके से आप ODI में इनिंग्स बिल्ड करते हैं. you know, पहले 48 बॉल में 41 रन, उसमें सिर्फ in his 50 he had only four boundaries, that's it. सिर्फ 16 रन, 16 runs out of 50 जो बाउंड्रीज से आए. And that is his foundation, and that is the ideal way, a foundation for uh, constructing big innings. कि आप सेट होते हैं पहले, थोड़ा टाइम लेते हैं, लेकिन जो क्लास बात है अबाउट केएल राहुल एंड ऑल्सो केएल as विराट एंड केएल राहुल इज कि वो डॉट बॉल्स नहीं खेलते. अगर आप देखें मेरे ख्याल से 94 बॉल्स का इनिंग्स था वो विराट का, उसमें सिर्फ 29 डॉट बॉल्स थे, विच इज लेस देन 30%. तो मतलब आप सेट तो कर रहे हैं अपने आप को, आप इनिंग्स बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन आप डॉट बॉल्स नहीं खेल रहे हैं. सो अगर आप लेस देन 30 मतलब हर तीसरे या चौथे बॉल पे आप एक डॉट बॉल खेल रहे हैं. तो दैट आई थिंक इज सो इम्पोर्टेंट. और एक चीज अबाउट विराट एंड ऑब्वियसली केएल एज वेल इज कि दे प्ले परसेंटेज क्रिकेट. व्हेन आई से परसेंटेज क्रिकेट, उनका रिस्क अगर आप देखें तो बहुत कम है. सिंगल्स निकालते रहते हैं, सेट होते हैं, और उसके बाद क्योंकि अभी मॉडर्न डे क्रिकेटर्स हैं तो बड़े शॉट्स तो हैं ही, चौके छक्के तो मार सकते हैं. इतना T20 खेलते हैं, लेकिन वही सेट होने के बाद, जैसे मैंने कहा पहले 41 रन्स और 48 बॉल्स, और उसके बाद 81 और 41 बॉल्स, क्योंकि एक बार आप सेट हो गए एंड एवरीथिंग एल्स, that was unbelievable. Same with KL Rahul. KL Rahul even more impressive क्योंकि
केएल राहुल वाज़ नॉट प्लेइंग इट और ये मैंने खुद देखा है। मैं ग्राउंड पे जब देख रहा था, केएल राहुल अलग कीपिंग कर रहे थे। ही वाज़न्ट प्रिपेयरिंग जैसे वो यूजुअली मैच के पहले प्रिपेयर करते हैं। अचानक मैंने देखा राहुल द्रविड़ भाग के गए उनके पास कोने में प्रसिद्ध कृष्णा बॉल डाल रहे थे और वो बॉल पकड़ रहे थे। भाग के गए राहुल द्रविड़ वहाँ पे, उनको अचानक मैंने देखा उनको हाथ पकड़ के खींच के ला रहे हैं एंड दैट्स व्हेन आई थॉट कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। और तभी दूसरी तरफ मैंने देखा श्रेयस जो है वो बैट लेके आए थे नॉकिंग जो नॉर्मल करते हैं। ही इज़ वॉकिंग बैक इनटू दैट ड्रेसिंग रूम एंड थोड़ा-सा वॉकिंग बैक तो नहीं कहूँगा, थोड़ा-सा अनकम्फर्टेबली वॉकिंग। और फिर देखा वहाँ पे रोहित आए एंड सडनली देयर वाज़ जो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच है, जो ट्रेनर है इंडिया के, वो आए, फिजियो आए एंड यू कुड सी दैट कि समथिंग इज़ हैपनिंग। एंड अचानक फिर वो उनको ट्रेनर ने कहा कि आप वार्म अप कर लो, उसने कहा नहीं मेरे पास वक़्त नहीं है। दिस इज़ 15 मिनट बिफोर द टॉस एंड ही वेंट इनसाइड, बैट लेके आए, थोड़ा नॉकिंग-वॉकिंग किया। सो 10-15 मिनट पहले ही उनको पता लगा होगा कि ही इज़ प्लेइंग दैट गेम एंड ऊपर से सेम थिंग एज़ विराट। वक़्त लिया शुरू में एंड देन धीरे-धीरे एंड हिम गेटिंग दोज़ रन्स एंड सिर्फ रन्स नहीं, लुकिंग इन फॉर्म इज़ सो इम्पोर्टेंट। और ये हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि आगे चल के केएल राहुल, नो क्वेश्चन अबाउट हिज़ क्लास, हिज़ पोटेंशियल और वो क्या कर सकते हैं। इट वाज़ हिज़ फिटनेस। कल तो उन्होंने विकेट कीपिंग भी पूरा किया, पहले 2-3 ओवर छोड़ के एंड दैट अगेन इज़ अ साइन कि हाउ इज़ इंडिया लुकिंग और इंडियन टीम मैनेजमेंट लुकिंग केएल राहुल वर्सेस ईशान किशन। अगर यही मुझे लगता कि ईशान किशन दे वर लुकिंग एट हिम एज अ कीपिंग ऑप्शन, फर्स्ट कीपिंग ऑप्शन, तो मेरे ख्याल से कल राहुल को बोलते कि राहुल आप रेस्ट लो, इंजरी के बाद आप लौटे हैं और आपने इतना बड़ा इनिंग्स खेला है इन हालातों में। बट नहीं, एंड ऑल्सो क्रेडिट टू केएल राहुल, ही ऑल्सो अंडरस्टैंड्स कि भैया आई विल नॉट लीव एन इंच। सो या, फेयर प्ले टू केएल राहुल। बट आगे चल के आई थिंक इट विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग और हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं कि आई थिंक द डिसीजन वुड बी श्रेयस, केएल राहुल, ईशान किशन, 2 आउट ऑफ द 3 एंड वो कौन होगा आगे चल के वर्ल्ड कप में, खैर वो बताएँगे अब। श्रेयस अय्यर्स मेडिकल अपडेट, अ, अंकुर राव पूछ रहे हैं। सो अंकुर, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड टू यू एज़ वेल अंकुर। उसका अगेन इट्स बैक स्पैज़म और बैक स्पैज़म उनका जो इंजरी था और जो ऑपरेशन हुआ है, इट्स अ थोड़ा-सा डेलिकेट ऑपरेशन। अ, वो एक उनका नर्व जो है वो वर्टिब्रे के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वाज़ पिंचिंग ऑन इट। तो तब जाके उन्होंने ऑपरेशन कराया एंड इट इज़ वही इंजरी। बैक स्पैज़म तभी होता है कि व्हेन द मसल स्पैज़म हो जाता है, मसल क्रैम्प जैसे हम कहते हैं, वैसे ही बैक के मसल जो है वो क्रैम्प हो जाते हैं। काफ़ी कारण हो सकता है और होपफुली इट इज़ नॉट बिकॉज़ ऑफ दैट इंजरी पर्टिकुलर जिसका ऑपरेशन वो करा के आए। तो वील हैव टू वेट एंड वॉच। अभी तक मेरे पास वैसे कोई खबर नहीं है। आई विल गिव यू एन अपडेट एज़ सून एज़ आई get that. But because this injury was delicate and this is quite serious, so we'll have to wait and see. Still, Kishan at 5, he scored runs, but can he came too early in that game. You're confident about Ishan at 5. I'm looking at Ishan at not at 5. ये just for fun का है. मैं मैं देख रहा हूँ कि शुभमन गिल, रोहित शर्मा, सॉरी, विराट कोहली एट 3 और उसके बाद यू शुड बी फ्लेक्सिबल। ये मेरा मानना है कि आपको अगर लेफ्ट हैंडर भेजना है तो आप भेज सकते हैं, आपको अगर राइट हैंडर भेजना है, जल्दी विकेट गिरा है, काउंटर अटैक करना है, ईशान को भेज दिया। अगर नॉर्मल खेल के निकालना है, तो वो तो मेरे ख्याल से वो फ्लेक्सिबिलिटी इज़ इम्पोर्टेंट। The other important thing about this partnership, which was, I think, was very unique, वो है कि it was split over 2 days, right? In ODI cricket, you're not used to that. You're not used to बैटिंग 24 ओवर्स और उसके बाद अगले दिन आके फिर 26 ओवर, लगभग 26 ओवर। सो उसके अलग डिमांड्स होते हैं क्योंकि आप सेट हो चुके हैं। पहले दिन आके आप सेट हो चुके हैं, फिर अगले दिन आके फिर सेट होना है, और फिर आपके पास सिर्फ
25 ओवर ही हैं, सो यू हैव टू बैट ऑलमोस्ट लाइक अ T20 इनिंग्स। सो या अगर आप देखें तो both of them got hundreds in a technically not T20 but in that format, क्योंकि उतने ही ओवर थे। थोड़ा-सा ऑब्वियसली पाकिस्तान की तरफ रुख करें तो सेकंड डे दे वर रिडल्ड विद इंजरीज। आई थिंक हारिस रऊफ 5 ओवर ना करना वो भी एक एस्पेक्ट था कि हारिस रऊफ के 5 ओवर, लेकिन ओवरऑल आई थिंक इट वाज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग एज़ फार एज़ पाकिस्तान इज़ कंसर्न्ड कि स्पेशली बैटिंग में तो इट सीम्ड लाइक देयर वाज़ नो प्लान। आई डोंट नो क्या था, इट वाज़ आए और जैसे जैसे नेट में बैटिंग करते हैं ना कि आए थोड़ा खेला, एक खराब शॉट खेल के आउट हो गए। सो इट इज़ क्वाइट डिसअपॉइंटिंग इन द सेंस कुछ फाइट ही नहीं था। सो इट डिडंट, even though very happy India won, but didn't feel like an India Pakistan game. और ऊपर से the सबसे बड़ा biggest concern for Pakistan is now the injury list is growing. अगर आप देखो तो obviously हारिस रऊफ ओब्लीक में वहाँ पे निगल है। नसीम ने अपने ओवर्स पूरे नहीं किए, उनका शोल्डर इंजरी पहले से है। 2-3 मैच पहले भी डाइव लगाते हुए शोल्डर में लगी थी उनको चोट, उसके पहले भी उनका शोल्डर इशू रहा है। सो नसीम डिड नॉट कंप्लीट, सो नसीम शाह तो सलमान आगा स्वीप लगाते हुए जो आंख पे लगी है, चलो कल उतना पता नहीं लगा लेकिन आई एम श्योर वो और सूजेगा। देयर माइट बी स्टिचेस एज वेल। तीन शाहीन का बोलिंग फिंगर वो याद है कैच पकड़ते हुए जो लगा था, इट इज स्वोलन नाउ। पता नहीं 2 दिन बाद whether he would be available or not। सो 4 ऐसे प्लेयर्स जो आपके मेन प्लेयर्स हैं एंड ऑब्वियसली फॉर्म ऑफ फकर जमान। सो या डिसअपॉइंटिंग एंड अ बिग चैलेंज फॉर पाकिस्तान गोइंग फॉरवर्ड इस टूर्नामेंट में, कम से कम क्योंकि 2 दिन बाद ही उनका मैच है। सो या बट एब्सोल्युटली परफेक्ट गेम। विराट, केएल राहुल, उसके बाद बॉलिंग की अगर हम बात करें, ऑब्वियसली बुमराह कमिंग बैक आफ्टर आई थिंक ओडीआई जुलाई 22 में उन्होंने लास्ट ओडीआई खेला था, बट व्हाट अ स्पेल। आई मीन ऑब्वियसली इमाम उल हक को जो आउट किया था वाज अनप्लेएबल काइंड ऑफ अ बॉल, देयर इज नथिंग मच यू कैन डू, बट दैट सीम पोजीशन एवरीथिंग स्पॉट ऑन परफेक्ट। ऊपर से ही बोल्ड 5 ओवर एट अ स्ट्रेच व्हिच इज गुड। 5 ओवर्स इन अ स्पेल मतलब थोड़ा सा लंबा ही स्पेल था, व्हिच इज गुड टू सी। उसके बाद ओवर्स नहीं कराए, but I guess slowly we'll be building him up into 100% match fitness, which is important. फिर आते हैं हम हार्दिक, व्हाट एन ओवर जो बाबर को उन्होंने ओवर डाला हार्दिक ने, अनबिलीवेबल। बॉलिंग में आई गेस बुमराह के साथ साथ द बिगेस्ट पॉजिटिव वाज कुलदीप। 5 विकेट कुलदीप के सेकंड टाइम इन हिज करियर, 5 विकेट हॉल ओडीआई में। लेकिन कुलदीप का जो सबसे इम्पोर्टेंट फर्क पड़ा है कि he was bowling the same line and length both left hander right hander। एक वो पेस बड़ा है, हम सब जानते हैं उन्होंने बहुत मेहनत की अपने फिटनेस के ऊपर। आई हैव स्पोकन टू हिम, आई हैव बीन स्पीकिंग टू हिम फॉर अ व्हाइल कि क्या है, तो उनका एक्शन उन्होंने बदला है। पहले थोड़ा-सा अक्रॉस जाता था, टुवर्ड्स टारगेट जाता है, रन अप तेज़ किया है, फिटनेस पे बहुत काम किया है। सो 5 विकेट फॉर हिम, अगेन ह्यूज पॉजिटिव। ओके, लेट्स स्टार्ट टेकिंग सम क्वेश्चंस नाउ। अंताज कह रहे हैं हाय पीके, आज के मैच में क्या होगा? कमिंग बैक टू श्रीलंका, विल डू दैट अभी। ओके, लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द श्रीलंका गेम्स। सबसे पहले तो थर्ड बैक टू बैक डेज ऑन द फील्ड, लेकिन ये थोड़ा सा स्प्लिट है, बट ऑब्वियसली इंटेंसिटी लेवल्स अलग होते हैं, मेंटली ज़्यादा टायर्डनेस होता है जब आप बैक टू बैक 3 दिन ओडीआई खेलते हैं, क्योंकि ऐसे मैचेस में ना जहाँ पे फिजिकली उतना शायद एक्टिविटी ना हो मैक्सिमम लोगों के लिए, अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली केएल एंड विराट एंड सम ऑफ द अदर्स बॉलर्स, लेकिन मेंटली क्योंकि आप बैठे रहते हैं, वेट करते रहते हैं कब रुकेगा बारिश, क्योंकि बारिश रुकते ही 45 मिनट में आपको ग्राउंड पे भी जाना है, मैच भी खेलना है, तो वो मेंटल एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है और मेंटली थोड़ा-सा ज़्यादा टैक्सिंग और एग्ज़ॉस्टिंग हो जाता है रादर देन फिजिकली। तो क्या चेंजेस करेंगे? देखिए, अगर विराट अगर चाहते हैं ब्रेक लेना और केएल चाहते हैं ब्रेक लेना, तो अलग चीज़ है, क्योंकि केएल भी आपको थोड़ा-सा सँभाल के चलना होगा केएल के साथ, क्योंकि अभी इंजरी से आए हैं। यू डोंट वांट टू ओवर एक्सर्ट।
तो आपके वहाँ पे देखना पड़ेगा श्रेयस किस हालत में, अगर श्रेयस का स्पैज़म अगर ठीक हो जाता है तो बढ़िया, लेकिन यू ऑल्सो हैव सूर्य कुमार यादव। तो आप ईशान को ऊपर बैटिंग करा सकते हैं, सूर्य को पीछे बैटिंग करा सकते हैं, तो वो ऑप्शन इंडिया के पास डेफ़िनिटली है, कि अगर दोनों में से कोई एक रेस्ट लेना चाहे। लेकिन मेरा ये मानना है कि नहीं लेंगे रेस्ट। अगर खेलते भी हैं दोबारा, knowing Virat, he will not move from that number 3 slot. लेकिन अगर थोड़ा-सा स्ट्रेन ज़्यादा लगता है, तो यू कैन ऑलवेज़, जैसे मैंने कहा, कि पीछे से आगे आ सकते हैं। ईशान ऊपर बैटिंग कर सकते हैं, वो थोड़ा पीछे खेल सकते हैं। तो वो ऑप्शंस हैं। लेकिन श्रीलंका मैच ऑब्वियसली हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते, बिकॉज़ दे आर ऑन अ 13 मैच कंसेक्यूटिव विनिंग स्ट्रीक। इवन दो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स थे, काफ़ी एसोसिएट नेशंस थे। घर पे खेल रही है श्रीलंका, एंड लुक लाइक अ दे लुक लाइक अ गुड साइड। तो हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। लेकिन इस टीम चेंजेस में मेरा ये मानना है कि अगर किसी को रेस्ट देना है, तो वो इस मैच में होना चाहिए, श्रीलंका वाले मैच में होना चाहिए, एंड नॉट अगला वाला मैच। ये सोच कि नहीं, श्रीलंका वाला मैच जीत लेते हैं तो वील क्वालिफाई फॉर द फाइनल्स, एंड देन बांग्लादेश के खिलाफ रेस्ट। रादर देन दैट, I'll my thought process would be कि इस मैच में रेस्ट लो, ताकि बांग्लादेश और फाइनल्स यू प्ले योर बेस्ट टीम। क्योंकि ये फाइनल्स के पहले रेस्ट वाला, नॉट प्लेइंग योर बेस्ट 11, आई एम नॉट अ बिग सब्सक्राइबर ऑफ दैट थॉट प्रोसेस। अगर रेस्ट देना है, किसी को ब्रेक देना है, तो शुड बी दिस गेम, एंड देन बांग्लादेश गेम, विन दैट, एंड प्ले द फाइनल्स सेम टीम, द बेस्ट टीम, क्योंकि बीच में एक दिन का गैप भी है वहाँ पे। रोज़ फुटबॉल कह रहे हैं, कहाँ गया? Roosevelt, its World Cup is near. Don't you think Pakistan look is weaker and weaker in all department? Yeah, I mean, batting middle order was always a challenge. Bowling जो उनका मेन था, और ये हम बात भी कर रहे थे प्री मैच प्रीव्यू में, कि ये जो हालात हैं, कंडीशंस विल नेगेट दैट टू अ सर्टेन एक्सटेंट। ऊपर से टॉस जीत के दोपहर में बॉलिंग ले लिया, तो फिर वो ज़्यादा नेगेट हो गया पूरा, एंड विद द इंजरी लिस्ट ग्रोइंग, yeah, areas of concern, definitely. There's no two ways about it. कि मिडल ऑर्डर, इवन दो अब सलमान अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन कल जिस तरीके से बैटिंग किया, इट वाज थोड़ा-सा शॉकिंग, टू बी ऑनेस्ट। आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दैट। मैंने कहा थोड़ा तो फाइट होगा, 300 356 वाज़ ह्यूज। बट आस-पास पहुँचेंगे। Is a good batting track, but Fakhar Zaman woefully out of form, and they need to start thinking seriously about that. कि if they want, with the World Cup coming, जैसा आपने कहा रोज़ू, कि अगर changes करने in that position should be now. Uh, should India rest Bumrah today just for fun? I don't think so. I don't think, क्योंकि 5 ओवर डाले हैं, अच्छा किया कि लंबा स्पेल नहीं करवाया। तो यू बिल्डिंग दैट फिटनेस, आई डोंट थिंक शुड बी, अनलेस ही थिंक्स, क्योंकि देखिए एक प्लेयर और जो इतना क्रिकेट खेल चुके हैं, ही अंडरस्टैंड्स हिज बॉडी। सो अनलेस ही सेज कि नहीं यार, मुझे थोड़ा-सा लग रहा है, देन इट्स अ डिफरेंट इश्यू। यश कोचर पूछे, हाउ अबाउट गिविंग रेस्ट टू बूम एंड मिया? Is an option, but again, like I said, with Bumrah bowling 5 overs and in that rhythm, क्योंकि जितना बॉल करेंगे मैच में, उतना आपको रिदम आता रहेगा। मैच फिटनेस, मैच रिदम, और क्योंकि 5 ही ओवर डाले हैं, उतना ज़्यादा भी नहीं एग्ज़ॉशन हुआ है, और बीच में आपने नोटिस किया होगा कि ही वेंट आउट ऑफ द फील्ड एज़ वेल। तो अनलेस ही इज़ नॉट फीलिंग इट, आई मेरे ख्याल से शुड। उसके बाद बांग्लादेश मैच, यू टेक अ ब्रेक। Mohammad Awais can, sir, what went wrong with Pakistan bowlers against India? I think Shaheen Naseem bowled very well. पहले spell में Shaheen bowled not as well as he can or he does, लेकिन मेरे ख्याल से जो अटैक किया, स्पेशली शुभमन, पहला इनसाइड एज, दैट वाज अ डिफरेंट थिंग, वो अलग है, लेकिन उसके बाद जो स्टेप आउट करके मिड विकेट पे मारा, एंड देन केप्ट अटैकिंग शाहीन, आई थिंक। और शाहीन का अगर आप देखेंगे तो ही हैज द टेंडेंसी टू बोल वेरी फुल। उनको लेंथ सही ढूंढना थोड़ा जल्दी पड़ेगा। पहले मैच में भी अगर आप सोचें तो इनिशियली उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था, देन द रेन ब्रेक केम, एंड देन आई एम श्योर किसी ने उनको बोला होगा कि एडजस्टमेंट करो वगैरह वगैरह, एंड देन ही एडजस्टेड। सो वो, एंड ऑब्वियसली हारिस रॉफ तो इंजरी, आई थिंक द बिगेस्ट इशू अभी
पाकिस्तान के लिए is injury to all three of them actually, Haris, Rauf, Naseem and Shaheen. Deep bhai, क्या आज जस्सी को rest? Kind of answered that. Again, I don't think so. Collaborate with one of the big channels. Your voice and your views are fire. Thank you so much, Yash. Yeah, we'll see. Yeah, see, the idea is it's would obviously love to have more and more people in the family. Like, and I like this interaction. So it's yeah, if and please feel free to tell your friends and spread the word around. Because I like this format a lot better than doing videos. Anyways, okay, I think I've answered that. Good morning, Vijay Thakur Saab. Rest. Should not be complacent in CT 2000, beat them in group. Cricket, crazy bong. No, it's not about being complacent. I think it's about how the importance of this victory. I can't tell you enough. याद हम लोग बात कर रहे थे इसके पहले भी in the couple of videos before कि this is a team which is there's something's not right. और मुझे ऐसा लग रहा था थोड़ा सा confidence level नीचे है, predominantly because this team has not played a lot of ODI cricket और काफी लोग इंजरी से आ रहे हैं, have not played the best playing 11 or the first playing 11 in a while, through injuries and rest and breaks and all of that. तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना वो confidence level नीचे लग रहा था. But a game like this brings everyone together. You've ticked a lot of those boxes. So I won't say complacent, no stretch of imagination. I think us dugout mein there is enough experience to tell them ki bhaiya, this was a terrible day for Pakistan and an absolutely brilliant day. A perfect day for India and an absolute disaster for Pakistan. It all coincided and you got that huge victory for India. So I'm sure nobody will be complacent there. But for a team, Indian team के नजरिए से, this is a game where everything comes together and you build that confidence जो कि हम कह रहे थे कि it seems to be a little lack. So leg spinner का कितना importance होगा इंडिया में? Oh, absolutely. कुलदीप के वो 10 ओवर would be so crucial because uh, देखिए गोइंग इन टू द वर्ल्ड कप ऐसा लग रहा है कि कुलदीप वुड बी योर मेन स्पिनर विथ जडेजा. जडेजा जनरली इज मोर ऑफ अ कंटेनर काइंड ऑफ अ बॉलर जो आपको कंट्रोल देता है, दैट वे. बट कुलदीप इज योर विकेट टेकिंग बॉलर और हम सब बाय नाउ वी आर अवेयर के एंड वी ऑल अग्री कि आपको मिडल ओवर्स में भी विकेट चाहिए. So that's where Kuldeep being a wicket taking bowler and attacking bowler is very, very important और उनका चलना is very, very important. Right. आज का वेदर फुल्ली सनी है ना, हमारा प्यारा सनी सर जैसे. अंदाज कह रहे हैं सनी, अभी फिलहाल तो सनी है, सनी नहीं कहूँगा, ओवरकास्ट. बट देखो फोरकास्ट ऐसे ही है for the next week. So yeah, really don't know. Hardik is difficult to guess as seam is not prominent. Seam is not prominent, but that is the reason थोड़ा सा wobble होता है. लेकिन कल seam सही भी था, but थोड़ा wobble seam can be very tricky क्योंकि पढ़ के it can move around, it can, seam के कौन से हिस्से में गिरता है, depending on that, the ball can seam off the pitch. आकाश गोस्वामी आज आज पहली बार, अच्छा पहली बार. ओके, सो वेलकम आकाश गोस्वामी. होपफुली नॉट द लास्ट टाइम. ऑप्रोज वाईटी कह रहे हैं सर लेग स्पिनर का कितना इंपॉर्टेंस. आई थिंक आई जस्ट आंसर्ड दैट. संजीत पूछ रहे हैं सर वेदर अपडेट बताते कैसे प्लेयर को रेस्ट मिलेगा. वेदर आप खुद भी देख सकते हैं कि अभी देख सकते हैं, हाँ वो थोड़ा सा बादल है. सो इट्स ओवरकास्ट, सो इट्स गोना बी अ लिटिल अनप्रेडिक्टेबल. जैसे कल भी इनफैक्ट कह रहे थे कि शाम को यू नो देयर विल बी अ स्पेल 7 बजे के बाद एंड ऑल, बट देयर वाज नो स्पेल. हालांकि रात को आज सवेरे इट रेन्ड क्वाइट अ बिट. That's that. Jianshu Dhingra guys, your thoughts on Shreyas Iyer will play in the World Cup. See, my thoughts are this about, और ये इस मैच के पहले भी कह रहा था कि श्रेयस, केएल राहुल
and Ishan Kishan. And as it seems, कि it will be Shreyas versus Ishan for one slot. So जो इस मैच के पहले मैं कह रहा था और मेरी जो सोच थी, बट आई थिंक दैट वुड चेंज नाउ. पहले मैं कह रहा था इन तीनों के बीच में दो खेलेंगे. आई थिंक नाउ इट्स मोर लाइक ईशान श्रेयस वन अमंग्स देम. या शशांक चौरासिया कह रहे हैं सर होप यू रिमेंबर मी. यस एब्सोल्युटली शशांक, एंड यू डिड मेंशन अबाउट के राहुल. सो will you work with your cinema about stars or hoping to see collab with Akash? Akash, हाँ बिल्कुल आकाश के साथ बात कर ही सकते हैं. We can do the a live or something with Akash. Absolutely. As of now, we'll have to see क्या होता है इसके बाद. क्या इसके बाद तो वर्ल्ड कप है, and then um, yeah, so we'll see how it goes. Uh, whether how was your experience in Pakistan? Free life कह रहे हैं. The experience was good. ज़्यादा कुछ तो देख नहीं पाए because matches थे and it was more like hotel to ground and back. Didn't get too much of an opportunity. Uh, Sorry. Hmm. Yeah, so didn't get too much of an opportunity. So yeah, would hopefully कभी मिलेगा मौका तो would want to explore a little more. उसमें कोई दो राय नहीं है. हिंदी कॉम बॉक्स में कोई चेंज तो नहीं होने वाला. आई थिंक होने वाला है. कैफ कह रहा था कि ही इज गोइंग बैक होम. या या सो आई थिंक Gaff might go back home. So yeah, there might be a change there. Um, क्या रोहित और राहुल से ओपनिंग कराना चाहिए? नहीं. आई थिंक शुभमन अगेन. रोहित और शुभमन बोथ ऑफ देम विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड कि उस स्टार्ट के बाद they did not capitalize. I think batted really well. शुभमन गिल ऑब्वियसली थोड़ा सा चांस ही था, एक दो चांसेस गए, लेकिन आई वोंट मेक दैट चेंज. आई थिंक ये बैटिंग ऑर्डर एज आई मेंशन, विराट एट 3 एंड उसके बाद से भी फ्लेक्सिबल लुकिंग एट द बॉलिंग अटैक सिचुएशन, कौन से बॉलर डालने वाले मिडल ओवर्स में, थिंग्स लाइक दैट. ओके. Hi, Pavan Saab. What does scale keeping before Ishan indicates? Yeah, Shashank, that's a good one. That indicates that um, KL Rahul is your first choice wicket keeper. And जो मैंने हम बात कर रहे थे पिछली बार, the choices, तीन players, KL Rahul, ईशान किशन और श्रेयस के बीच में दो. I think it has boiled down to ईशान किशन एंड श्रेयस अय्यर, बिटवीन दोज टू, ऐसा मुझे लगता है. एंड के राहुल इज योर फर्स्ट चॉइस कीपर. that's how I read this situation. पवन प्रताप सिंह कह रहे हैं क्या विराट कोहली सबका बाप है सर? देखो, he is, I mean, he'll end up, whenever he retires, one of the greatest ODI players. He's a modern day great. He'll end up being one of the greatest ODI players, no doubt about that. 4700s. और ये आप लिख लो कि by the end of the World Cup, he will have 50 ODI hundreds. Yeah, and I think it's not जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहा है, I don't think it's a bold prediction or anything. But yeah, I think by the end of the World Cup, he'll have 50 ODI hundreds. And yeah, जिसे कहते हैं ना, इस फॉर्मेट को घोल के पी गए हैं विराट. Anyways, yeah, so moving forward, आप फाइनल तक हो ना सर श्रीलंका में? अंतास नहीं, मैं फाइनल में नहीं हूँ बिकॉज माय सन ही इज गोइंग टू द यूनिवर्सिटी, तो मुझे वापस जाना होगा उसका यूनिवर्सिटी उसको छोड़ने एंड टू सेट हिम अप, क्योंकि यूनिवर्सिटी दूर है घर से. तो हैव टू सेट हिम अप. तो उसके क्लासेस शुरू हो रहे हैं 20 तारीख से, सो आई विल हैव टू गो एंड हॉस्टल वगैरह सब सेटअप करना है. तो इसलिए फाइनल में नहीं रह पाऊंगा मैं. Have you also given your voice in any cricket Android game? शशांक पूछ रहे हैं. Yes, I have actually, a while ago.
चार साल हो गए। नेपाली क्रिकेटर्स परफॉर्मेंस इन एशिया कप, रोसू कह रहे हैं, आई थिंक वेरी गुड, वेरी इम्प्रेसिव। डिसिप्लिन, आई थिंक नेपाली क्रिकेटर्स जिस तरीके से परफॉर्म किया, वेल विद इन देयर their boundaries. They were extremely disciplined, or importantly, not overawed by the opposition. Pakistan, India, big names in cricket, but not overawed. Performances आप देख लो पाकिस्तान के खिलाफ भी आखिरी 10 ओवर में, that is lack of experience to a great extent. लास्ट 10 ओवर में ही was the issue. उसके बाद बैटिंग में इंडिया के साथ, बॉलिंग में भी, आई थिंक there is good bunch of cricketers and good guys you can work with. So hopefully, cricket in Nepal builds on. I think last 2 साल में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट किसी टीम में आया है, तो आई थिंक वुड नेपाल वुड बी वन ऑफ देम। ओके, और क्या है? लेट्स टेक कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस। सो सेम विकेट पे आज का मैच होगा क्या? दैट्स अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली। कल मैं इतना इन्वॉल्व हो गया था, आई डिड नॉट नोटिस। Jeez, I don't think so. I don't think कि 3 दिन बैक टू बैक एक पिच पे खिलाएंगे। I'm sorry, I did not notice actually. Ankur Rao. Is Kusal Pereira included in full squad of SLSL? Should play him. He's a match winner. He is a match winner. But the only challenge is किसकी जगह पे आप खिलाओगे? I mean, who does he come in place of? They look a pretty set side with 13 consecutive wins. It's difficult to, unless forced, but I think it's a very set side who's doing well. So yeah, only obviously उनके issues is bowling. हसरंगा वापस आएंगे, उसके बाद चमीरा आएंगे, लाहिरू कुमारा, वो सब आ सकते हैं, but the bowling is weakling. Pathirana, as good as he is, as talented and exciting as he is, लेकिन अभी भी I think वो experience और मैच एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ा सा कम है। वो आ जाएगा खेलते खेलते, थोड़ा सा और मैच्योरिटी आएगा। बट या आई थिंक आज भी, आई थिंक विद श्रीलंका, their strength is obviously their batting. Bowling में they look a little weak because of the injuries. वर्ल्ड कप पैनल अनाउंस हो जाएगा ना कुछ ही दिनों में, पूछ रहे हैं। या कुछ ही दिनों में हो जाएगा। Will too many options with Australia team can create a problem of plenty for hampering their 11? Hampering, sorry, their 11. Shashank, I don't think so. I think they also do have a very good side and definitely one of the top teams in the world. सिर्फ नहीं कहूँगा। और उनके पास वो प्लेयर हैं जो इंडियन कंडीशंस में खेलना जानते हैं and can play in Indian conditions. All of them have a lot of experience through IPL playing in India. And yeah, I mean, top 4 teams में मेरे definitely Australia is one of the first names. You know, runaway favorites नहीं कहूँगा, but one of the favorites for sure. Right. Which player do you think will make a wild card entry in this World Cup? Can be from any team, Shashank Pujin. Wild card entry. I haven't actually thought about it. Actually, I haven't thought about it. We'll obviously World Cup के पहले we'll do a lot of those live shows. Cricket Antas, okay, this is the last one. वो पूछ रहे हैं, King Kohli breaks Sachin Paji's record before World Cup? Yes, जैसे मैंने कहा, मेरा ये मानना है before, obviously, ऐसा as in Sachin's got 49 hundreds. और मेरा ये मानना है कि by the end of the World Cup, Virat will be on 50. Right? So, yeah. Anyways, I've got to go. आज थोड़ा call time ज़्यादा है. I'll just have to go change and get ready for the Sri Lanka game. So yeah, see you all soon. And yeah, do subscribe. Do press that bell icon notification. ये lives के लिए आपको फिर पता लग जाएगा. Thank you for your time, all of you. Was wonderful last 35 odd minutes. And see you soon. And please do spread the word around. Ki, I'm doing it more regularly now. So let's catch up soon. I've got to go here. Got to change and get ready and be on my way. Bye for now. Thank you again. Thank you so much. Have a lovely, lovely day and see you soon.